this is the second set from LRDI sections of CAT 2025 morning slot. So let's see the solution of this. A train travels from station A to station E, passing through station B, C, and D in that order. The train has a seating capacity of 200. A ticket may be booked from any station to any other stations ahead on the route, but not to an earlier station. A ticket from one station to another reserves one seat on every immediate segment of the route. For example, a ticket from B to E reserves a seat in the intermediate segments B to C, C to D, and D to E. The occupancy factor for a segment is the total number of seats reserved in the segment as a percentage of the seating capacity. The total number of seats reserved for any segment cannot exceed 200. The following information is known. Segment CD had an occupancy factor of 95%. Only segment B to C had a higher occupancy factor. Exactly 40 tickets were booked from B to C and 30 tickets were booked from B to E. Among the seats reserved on segment D to E, exactly 4/7 were from stations before C. The number of tickets booked from A to C was equal to that booked from A to E, and it was higher than that from B to E. No tickets were booked from A to B, from B to D, and from D to E. The number of tickets booked from any segment was a multiple of 10. And now here is a set of 5 questions. What was the occupancy factor for a segment D to E, and this how many tickets were booked from station A to E, how many tickets were booked from station C, and this was the difference between the number of tickets booked to station C and the number of tickets booked to station D. How many tickets were booked to travel in exactly one segment. So here only one is a MCQ questions and the rest are NMCQ. So okay, let's see the set. So as it is given, the occupancy factor, first take this again. A train travel from station A to E. A to E passing through station B and C in that order. So train is moving from station A to station E, and intermediate stations are B, C, and D. And the total capacity of train is 200. Total seating capacity is 200. And here ticket from one station to another reserves one seat on every immediate segment of the route. A ticket from B to E reserves a seat in the intermediate section. अगर कोई टिकट B से E के लिए रिजर्व कराई गई है तो B to C, C to D, D to E भी वो सीट उसी के लिए रिजर्व रहेगी. एंड फिर ये 6 कंडीशंस. तो इसका मतलब कुछ इस तरीके से है लाइक A, B, C, D, E. So train is moving from this station to A to B to C to D to E. And ticket reserve from any stations to any other stations, but only in one direction. Means A to B you can uh, book a ticket, A to C you can book the ticket, A to D you can book, A to E. But in a reverse order, B to A or C to A or D to A or E to D or E to D, this is not a case here. In reverse direction you cannot, in reverse direction you cannot reserve a C. This is the basic idea. Okay. So let's start work here. Okay. यहाँ पर इंफॉर्मेशन को मैंने कुछ शॉर्ट में लिख लिया. मेन इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन यहाँ पे जो मतलब की है उनको लिख लिया. तो चलिए अब आपको तो ये पता ही लग गया कि स्टेशन ए टू बी टू सी टू डी टू ई. एंड लेट्स अंडरस्टैंड पॉइंट वाइज. टोटल कैपेसिटी इज 200. ट्रेन की टोटल कैपेसिटी 200 है, इक्वल टू 200. 200 से ज्यादा लोग ट्रेन में नहीं आएंगे, लेस देन 200 हो सकता है. ऑक्यूपेंसी फैक्टर भी डिफाइन करी गई है, उसको भी समझते हैं. ऑक्यूपेंसी फैक्टर क्या है? It is the total number of seats reserved in a segment as a percentage of the seating capacity. So total seating capacity is 200. Segments are A to B, B to C, C to D, and D to E. Suppose between A to B there are X seats reserved. So
occupancy factor of this segment AB will be X upon 200 into 100, right? This is all about occupancy factor. Hmm. Now see point number one. This point number one is segment C and D had an occupancy factor of 95%. C and D के बीच जो occupancy factor है, it is 95%. Okay. It means between C and D, the total seats reserves 95% of 200. It is equal to 190. So this is very clear data given. Between C to D, 190 seats are reserved. Okay. Only segment B to C had a higher occupancy factor. It means B to C का जो occupancy factor होगा greater than 95% है. Otherwise, rest of the segment like D to E, it is less than 95%. And A to B is also less than 95%. Correct. This is from condition number one. Okay. Now see number two. Exactly 40 tickets were booked from B to C. Exactly 40 tickets were booked from B to C. Okay, like this A, B, C, D. E. So exactly 40 tickets were booked from B to C. Exactly 40 tickets. And 30 tickets were booked from B to E and 30 tickets booked from B to E. Right. This is all about point number two. Number three, among the seat reserves on segment D to E, exactly 4/7 were from stations before C. Okay, इस इंफॉर्मेशन को अभी हम लोग अंडरलाइन करके छोड़ देते हैं, आगे देखते हैं. Now see number fourth condition. The number of tickets booked from A to C, A to C, A to C was equal to that booked from A to E. So A to E is also same as well. A to C, suppose it is X, then A to E is also X. And it was higher than that from B to E. So B to E 30, it means the value of X will be greater than 30. X is greater than 30. This point is to be noted carefully. It is X. Now see point number 5. No ticket were booked. The number of tickets A to C was equal to that booked from A to E. Okay. It was higher than that from B to A. Okay. Now point number 5. No tickets were booked from A to B. So A to B, no ticket, 0. B to D, B to D, 0. Means A to B, 0. B to D, 0. And from D to E, D to E is also 0. No ticket were booked from A to E, B to D, and D to E. This is all about point number 5. So D to E is also 0. 6. The number of tickets booked from any segment was a multiple of 10. Okay, so this is a very, very important information. The number of tickets were booked from any segment was a multiple of 10. Means number of ticket will be booked like 10, 20, 30, 40, 50, 60. Means the multiple of 10. Okay. So this is all. These are all 6 points. And now see the logical connectivity.
It is given that between C to E, it is 190. So C to D occupancy is 190. Let's write here. C to D is 190. रुक जाइए, इसको यही रखते हैं. C to D 190. A point is to be noted. B to C occupancy factor is greater than 95%. B to C is greater than 95%. And when the number of tickets booked as a multiple of a 10, so after 190, so it cannot be 191 or 192 or 193. Directly it is going to be 200. Is it right? Between C to D, you have calculated 190, and it is given that only segment B, C had a higher occupancy factor. Higher occupancy factor means B and C higher than 95%. But number of tickets here booked as a multiple of a 10. तो 95% इज इक्वल टू 190. तो 190 से ज्यादा क्या हो सकता है? 190 से ज्यादा अगर कोई 10 के मल्टीपल में चीज ऐड हो रही है तो 200. ये एक बहुत समझने वाली बात है. इट मीन्स बी टू सी के बीच में पूरा का पूरा डब्बा फुल था. राइट, बिटवीन बी एंड सी सेगमेंट्स द ऑक्यूपेंसी वाज 200. पॉइंट इज क्लियर? ओके. And rest. Okay. AB occupancy factor is less than 95%. A to B, A to B अगर आप देखें तो क्या आ रहा है? A to B ये तो जीरो हो गया. फिर A to B जो A से C के लिए X रिजर्व हुई थी, X टिकट बुक हुई थी, तो वो कैंडिडेट X बिटवीन A to B सेगमेंट होंगे प्लस X. A to D, okay, let us take A to D is, इसको मैं डिफरेंट इंक से लिख देता हूं. Let us take A to D is Y. So if A to D Y ticket booked, so here A to B 0, right? A to C is X, तो ये X लोग A सेगमेंट में, AB सेगमेंट में होंगे और ये Y लोग भी होंगे. मीन्स Y टिकट जो बुक हुई है A to D, so here सेगमेंट A to B में भी वो Y सीट्स बुक होंगी. A to E X, इसका मतलब ये जो X टिकट बुक्ड है वो A टू B के लिए भी बुक्ड होंगी. इज इट राइट? सिंपल सी बात है. अगर A से C X लोग जा रहे हैं तो A से B भी होके ही जाएंगे. A से D अगर Y लोगों को जाना है, Y टिकट Y सीट रिजर्व है, तो वो सीट A से B और B से C में भी रिजर्व ही होगी, क्योंकि उन्हें जाना तो A से B, B से C होकर है. इसी तरीके से इफ A टू E देयर आर X टिकट बुक, सो इट मीन्स ये जो X लोग हैं A से B, B से C, C से D, D से E होते हुए आए होंगे. तो इसका मतलब X, Y और ये X, तो बिटवीन A टू B ये हो गया 2X प्लस Y. ओके, नाउ सी बिटवीन B एंड C. B एंड C, B एंड C ये 40 टिकट रिजर्व में, लेकिन A टू C जो X टिकट बुक हुए थे, ये X लोग B और C के बीच में भी होंगे. X जो लोग A से D के लिए जा रहे होंगे, या जो टिकट बुक हुई हैं A से D के लिए, बाई टिकट बुक हुई हैं, तो ये लोग बिटवीन B एंड C होंगे. ये वाले X जो टिकट बुक हुए थे A से E के लिए, ये भी बिटवीन B एंड C होंगे. राइट. एंड B से C के लिए 40 लोग जा रहे थे, ये भी होंगे. 40 लोग जा रहे थे या 40 टिकट्स रिजर्व. फिर इसके बाद B टू E 30 लोगों का रिजर्वेशन हुआ था, या 30 टिकट्स बुक हुए थे, 30 टिकट्स रिजर्व थी. तो B टू C ये 30 सीट्स और रिजर्व हुई.
तो बी टू सी क्या हुआ, x+y+x 40 एंड 30. दिस इज इक्वल टू बी टू सी इज इक्वल टू 200. दिस इज योर equations. Ready? Okay, so we can write it 2x plus y plus 70 is equal to 200. Let us take C to D. Okay, C to D. ये x वाली सीट केवल C तक रिजर्व थी तो इनका मतलब नहीं रहेगा. C टू D के बीच में ये A टू D जो y था ये होगा y. A टू E जो x थे वो भी होंगे. ठीक है. बी टू सी केवल 40 थे लेकिन बी टू ई जो 30 थे वो सी टू डी के बीच में होंगे. अब इसके बाद जो टिकट सी से डी के लिए रिजर्व हुई होंगी, सपोज सी टू डी, सपोज सी टू डी डब्ल्यू टिकट्स बुक्ड एंड सी टू ई जेट टिकट बुक्ड. सो नाउ सी between C and D, y plus x plus 30 and C to D, W plus C to E, Z, ये लोग भी C to between C D यानी C D सेगमेंट में प्रेजेंट होंगे. यानी कि ये टिकट जो Z टिकट रिजर्व करी है C से E तक, ये C to D के बीच ये सीट्स रिजर्व होंगी. ओके, तो बिटवीन C to D ये y, ये x, ये w, ये z और ये 30. Between C to D is already you have calculated is to spend 90. And now between D to E. D to E ये वाला x, ठीक है, ये y तो उतर चुका था यहाँ पे, ये x, ये 30 और ये z. x 30 plus z, x 30 plus z. इट इज लेस देन ऑक्यूपेंसी 95% से लेस थी तो आप कह सकते हो लेस देन 190. 95% is 190. It is less than 95%. It is less than 190. And now see, it is 2x plus y plus 70 is equal to 200. It means कि जो 2x plus y है इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, 130. Because 2x plus y plus 70 is 200. So 2x plus y is 130. So this is your fourth equation. Okay. And now one point number 3 which we have underlined, इसको देखते हैं. Among the seat reserved on segment D to E, D to E कितनी रिजर्व हुई थी, x plus 30 plus z. Among the seat reserved on segment D, exactly 4/7 were from stations before C. तो इसकी जो 4/7 है, 4/7 is equal to सीट बुक्ड बिफोर सी. तो बिफोर सी स्टेशन कितनी बुक हुई थी, यहां पर ये एक्स पहले बुक हो चुकी थी और ये 30 भी स्टेशन बी से बुक हुई थी यानी बिफोर स्टेशन सी बुक हुई. इसका मतलब एक्स प्लस 30 इज इक्वल टू 4/7 ऑफ एक्स प्लस 30 प्लस जेड. इज इट क्लियर? फिर से सुनिए. Among the seat reserved on segment D and E, D to E, तो D to E seat reserved, X plus 30 plus Z. Exactly 4/7, इसकी 4/7 were from stations before C. Before C, तो ये X देखो, A से बुक हुई थी ये वाली है,
इसका मतलब बिफोर स्टेशन सी हो गया। ये 30 भी कब बुक हुई थी? ये 30 बुक हुई थी स्टेशन बी से, B to E30 था, तो ये भी 30 आ गया। अब ये जो जेड है, ये जेड सीट्स कब, ये सी के बाद, ये C to E रिजर्व हुई थी, और यहां पर था बिफोर स्टेशन सी। तो इट मीन्स x+30 इज इक्वल टू 4/7 ऑफ x+30 + z। सो नाउ दीज आर इक्वेशंस जिनको हम लोग कर सकते हैं। तो इट इज 7x + 210 इज इक्वल टू 4x + 120 + 4z, and here 7x minus 4x is 3x, and 210 minus 120 is +90 is equal to 4z, right? So this is equation number 5. And now we can solve these 5 equations. ठीक है? कैसे क्या होगा? It is x+30 + z less than 190. So the 3x + 90 is equal to 4z, means 4z, 3x + 90. Look here. Here left hand side is a multiple of a 4. So right hand side result should be multiple of 4. Okay. So let's start the hit and trial method. X की वैल्यू ग्रेटर देन 30 थी। X आप क्या ले सकते हैं? X you can take 40 or 50 or 60 or 70 like this. If you take X is equal to 40, तो 40 + 3 120, 120 और 90, ये जो उसका सम आएगा 210, ये 4 का मल्टीपल नहीं है, तो राइट हैंड साइड 4 का मल्टीपल नहीं, मींस x is equal to 40 is not possible. If you take x is equal to 50, 53 is 150, 150 + 90, 240. And 240 is a multiple of a 4, so 4z is equal to 240. It is possible. So means x you can take x 50 ले सकते हैं आप, 40 नहीं होगा। अच्छा, x अगर आपने 50 लिया, if you take x is equal to 50, so 4z is equal to 240, it means z is equal to 60, right? ऐसे ही if you try for 60, x is equal to 60, if I try 60, so look here, if I take x is equal to 60, so 3 into 60, 180, 180 plus 90, 270, and 270 is not a multiple of, तो फिर ये तो नहीं होगा, means z is equal to 60 is not possible. If I take 70, 73 z 210, 210 plus 90, 300, and 4z is equal to 300, it is possible. So this, in this condition, z is going to be 75 when x is 70. इस तरीके से for x is equal to 70, z is equal to 75. तो यहां पर ये z, x और z की वैल्यू निकलनी, अगर x 50 है तो z 60। अब x मिनिमम, x की वैल्यू 50 ले सकते हैं क्योंकि 40 तो पॉसिबल ही नहीं था। 50 यहां पर देखो 2x + y, अगर x की वैल्यू हम लोग 50 रखेंगे तो 2 into 50, 2 into 50 100, 100 plus y 130 हो सकता है। But if I take x is equal to 70, तो 2 into 70, x is equal to 70 अगर यहां रखोगे तो 2 into 70 become 140, and 140 plus y is equal to 130। एब्सर्ड बात हो रही है, मतलब x की वैल्यू हर हालत में
70 अगर रखने पर जब यही 140 आ जाएगा तो 140 प्लस 130 कहां से आएगा, तो इसका मतलब एक्स 70 नहीं हो सकता। तो आपको इस तरीके से क्या मिल गया, ये पता लग गया कि एक्स की वैल्यू 50 ही होगी, तो एक्स इज 50 नॉट 70। एंड फर्दर, जब व्हेन एक्स इज इक्वल टू 70 इज नॉट अलाउड, देन फर्दर इफ एनी पॉसिबिलिटी फॉर द एक्स अगर एग्जिस्ट भी करती है इस इक्वेशंस के लिए, तो यहाँ तो मीनिंगलेस है ना। तो नाउ इट इज क्लियर दैट एक्स इज इक्वल टू 50, and as you decided x is equal to 50 and z is equal to 60. Further, we can decide all these values. x की वैल्यू यहाँ रखेंगे 2x 250 100 100 प्लस 30 30 y भी आ गया, राइट। इसको एक फ्रेश हम लोग नए पेज पे ये कैलकुलेशन देख लेते हैं, यहाँ से हटा के इसे। तो x हमारा 50 आ गया, z 60 आ गया। इसको फर्दर पेज पे कैलकुलेट कर लेते हैं, जगह कम है इस जगह पर। तो ये हमारा x हम लोगों ने भी कैलकुलेट किया था, x हमारा 50 आ गया था, y 30 हो गया था, और z 60 हम लोग कैलकुलेट कर चुके थे, राइट। So x is 50, y is 30, z is 60. So here it means x plus z plus 30 की एग्जैक्ट वैल्यू आप निकाल सकते हैं। x is 50, 30 50 और z है 60 प्लस 30, तो इट इज 140। तो जो लेस देन 190 था, यस इट इज 140, लेस देन 90, तो ये आपका। तो बिटवीन डी टू ई ऑक्यूपेंसी क्लियर हो गई। अब एक्स प्लस वाई प्लस डब्ल्यू प्लस जेड, सो डब्ल्यू कैसे निकलेगा, यहां से इस इक्वेशन से एक्स इज 50, वाई इज 30, डब्ल्यू टू बी फाइंड आउट, एंड जेड इज 60 प्लस 30 इज इक्वल टू 190। तो 50 30 30 80 110 170 170, W plus 170 is 190, is means W is equal to 20. So this W is equal to 20. Now every point is clear. A to B, A, B, C, D, A to B, 0. A to C, X, and X is equal to 50. A to D, Y, and Y is equal to 30. Then A to E is X, and this is 50. Okay. B to C ये 40 है, B to D 0 है, एंड B to E 30 है, C to D taken W, and W is here equal to 20, and C to E Z, C to E Z, and Z is here equal to 60, right? And D to E is 0. So now each and every point is clear. Further, you can answer all the questions. Let's see the questions. What was the occupancy factor for segment D to E? So D to E is 140. D to E is 140. So 140 upon 200 into 100 is 70%. 200 का 140 मेंटली कैलकुलेट कर सकते हो।
How many tickets were booked from station A to station E? Station A to B 0, A to C 50. This result is from calculation, which I have done on previous page. So how many tickets were booked from station A to E? A to E, 50. Answer is 50. How many tickets were booked from station C? So C to D, 20, C to E, 60. So total is how many tickets were booked from station C? 80. Answer is 80. Two more questions. What is the difference between the number of tickets booked to station C and the number of tickets booked to station D? Booked to station C. So A to C 50, B to C 40, 50 plus 40, 90. And then the number of tickets booked to D, A to D 30, B to D 0, C to D 20. It is 50. It is difference. क्वेश्चन में डिफरेंस पूछा गया है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ टिकट बिटवीन टिकट बुक टू स्टेशन सी 90 and to station D 50. So the difference 90 minus 50 is 50. This is a difference. Okay, how many tickets were booked to travel in exactly one segment? Exactly one segment. A to B 0, B to C 40, C to D 20, D to E 0. So this 40 plus 20 is equal to 60. So it was a good set, very tricky one, not easy. It was not easy, but it can be managed if you work with a cool hat.